Welcome back, viewers, to the show. We are discussing, is democracy the best form of government? I've got a star-studied पैनल टुडे और जो अभी तक जो डिस्कशन हुआ उसमें हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी किस तरह इंडिया में, बरतानिया में, चाइना में उसके क्या इम्पैक्ट हैं। अब हम शो के दूसरे हिस्से में जा रहे हैं और हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि हाउ इको सोशलिज्म, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है, और हमारे एक ट्विटर फॉलोअर ने वो क्वेश्चन भी हमें भेजा कि आप डिस्कस करें कि इको सोशलिज्म का क्या रोल है इन डेमोक्रेसी और ये नई टाइप ऑफ डेमोक्रेसी होगी। तो प्लीज़ आप ट्विटर पे जाएं, वहाँ पे एक ट्विटर पे पोल हमने डाला हुआ है @सिद्दीकी आफ्ताब, वहाँ फॉलो करें और वोट करें। एंड ऑफ द शो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट्स द रिजल्ट इज, सो यू शुड बी वोटिंग टू विन। So I'll come back to you, Saloni. What do you think in terms of how we can sort of integrate the overall democratic concept and then also introducing the climate issues, eco-socialism, जो कि एक नया ट्रेंड है और जो यूरोप में अक्रॉस इस वक्त लोग उसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं। Yeah, basically we have a lot of issues at the moment that scientists have proven. Firstly, it's accepting the fact that there is climate change. I think Donald Trump was actually against climate. He didn't believe in it. I think governments have a huge responsibility to the public to look after the environment we're in. We have future generations to consider, and currently we're cutting down many of our forests. The Amazon forest actually provides, I believe, 20% of the oxygen of the earth, and it's being destroyed slowly. We have polar ice caps melting because of global warming. We do have some severe issues with the earth, and we need to look after it. Eating meat, the meat industry causes so much detrimental, hazardous conditions on this planet. I think followed by fuel. I think meat in the methane gases it produces in the industry is terrible, and I feel it's in a democracy where people need to acknowledge this, governments need to acknowledge this, address this, and even bring some of it into law. I think with the congestion charge, it's a very small scratching the surface, but at least it's addressing the issue. Yeah, sorry to interrupt. I think it's effective with the Paris Agreement and countries abiding by the 2025 Sustainable Development Goals. Yeah. That's very important, but then if you have leaders such as Trump holding a retraction to that, you're in tested waters once again. And the environment, as Saloni rightly points out, is for future generations. But if we don't make it a clear statement, we are in murkier times. I think Sadaf, the issue is Trump has what he has said, and I'm not a big fan of him. But the issue is he has come on the scene very late. We had a Green Party in UK for donkey years, if you to ask me, but they haven't made any impact in the electoral politics. Priti, what do you think? किधर हम लोग जो green agenda है, ये हमारी democracy और हमारी social system का part क्यों नहीं बन पा रहा on an electoral system? On an electoral system, I think it's down to the public to actually take control as well. It's like what Modi is trying to do in India with creating the clean rivers and trying to clean up the whole of the Ganges there as well. Yeah. And the difficulties that he's actually having with the public not really paying that much attention. If he was to actually put this out there and people were to pay attention to everything that was going on, the economy would improve so much, so would the whole social status. I agree with Ridhi. It's a question of awareness. Yes. I think, but Sadaf, I think from the public. No, Sadaf, I think the issue is awareness has been kind of fallback for all of us. But the issue is, I think, because as you know, we discussed that I've been covering the water crisis in South Asia. I chose Pakistan because it's reported that it will run dry by 2025. But the main crux was awareness. I think we have to look at the grassroots level in order to create development in terms of the environment. If we don't start at the bottom, because it's a simple example of people are educated about water conservation in their homes, turning the taps off, farming, when to plant, when to irrigate. People are not informed, they're not educated, and that's all due to awareness. If governments equated an awareness program in schools, in higher education facilities, in businesses,
the environment would look dramatically different. But the issue is funding. I think, but I think, Sadaf, there is another issue. The way we run our democracy in this country, in many other parliamentary democracy, it's skewed towards a two-party system. और जब हम जो फर्स्ट पास द पोस्ट का डिस्कस करते हैं उसमें दो पार्टीज आती हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग जो भरम बना हुआ है वो किसी तरह टूटे नहीं और वो मामला चलता रहे और उन लोग जो है वो हमेशा इलेक्ट होते रहे। और मेरा यहाँ पे जो इशू है वो ये है कि जब तक हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस नहीं करते, दे वुड बी नेवर दिस जिसे कहते हैं ना कि आयरन क्लैड ग्रिप ऑफ टू पार्टीज ऑन द गवर्नमेंट, वो ख़त्म नहीं होती तो न्यू आइडियाज़ नहीं पनप सकते। हम जो नए आइडियाज़ लेकर आना चाहते हैं एनवायरनमेंट के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, आम आदमी को डिलीवर करने के हवाले से, वो नहीं। बिकॉज होता ही है कि जब दो पार्टी सिस्टम होता है हम जाते हैं आपको फॉरन एडवर्सेरियल रिलेशनशिप बन जाता है कि देयर इज वन इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, अनदर वन इज द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे स्टार्ट सॉर्ट ऑफ नॉट डिलीवरिंग फॉर द पीपल, दे स्टार्ट डिलीवरिंग फॉर देयर ओन एजेंडा व्हिच मे नॉट डिलीवर टू द एंटायर पॉपुलेशन। उसका इशू जो है वो मेरे लिए लगता है कि वो जो प्रॉमिस ऑफ डेमोक्रेसी है उसको रोकता है। तो रिद्धि, वेयर डू यू थिंक दैट लाइज? इज इट ये जो एडवर्सेरियल रिलेशनशिप है इसको खत्म होना चाहिए? शुड दे ऑल, बिकॉज इवन इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ अ वेरी डेवलप्ड कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, जहां पे आपको वोट नहीं करें तो आपको बेसिकली सजा हो जाती है। तो यू हैव टू, इट्स मस्ट, it's a responsibility for you to go. There is one political prisoner in Australia when last I checked, and it's just because he didn't vote it. So he is the only political prisoner in Australia. So जब आपके पास ये situation बन जाती है तो how do you think कि हम और चीज़ों को और डेमोक्रेसी कैसे डिलीवर कर पाएगी जब ये एडवर्सेरियल रिलेशनशिप रहेगा? I think it's a situation there of the majority and the majority rule over the minority, and I think that is the problem within a democracy, is that it's the majority voice that's being heard, but yet there isn't that much attention being paid to the minorities. And if they still have really good ideas, which in most cases they do, they don't really have the chance to voice those opinions. So yeah, no, I understand. Sadaf, I'll bring this question to you just within a minute. We've got a caller. Sanjay, go ahead. Hello. What's your question, boss? Hi, very good program, very good discussion. Really enjoying this. Thank you very much. Okay, I just like to share, like, in terms of democracy, like, the only thing I feel, the biggest flaw that I feel is that when there's a two parties or, there are more than two parties and let's say one party comes as a majority, what I don't understand is why everything the party that has won is supposed to be then wrong according to the opposition. Why isn't the opposition trying to somehow work with them for the greater good? Because how can suddenly everything they do be wrong? I think, Sanjay, you're right. I think there's another problem to it. Thanks for bringing that question and thanks for viewing the program. Issue ये है कि अगर एक पार्टी जो दो पार्टी सामने आ गई लेकिन उससे जो पहली पार्टी होती है उसने जितना काम किया होता है, प्रॉब्लम पार्लियामेंट्री सिस्टम में होती है कि पहले वो मल्टीप्लाई बाय जीरो कर देते हैं। लाइक अब जैसे कांग्रेस ने कोई काम किया होगा तो बीजेपी उसको मल्टीप्लाई बाय जीरो कर देगी, कंजर्वेटिव ने किया होगा तो लेबर उसको मल्टीप्लाई बाय जीरो कर, तो दे स्टार्ट फ्रॉम wiping out the slate. Why can't they understand that they have to continue to build on the existing platforms which were done by the government? So that is an issue. So if you were saying something? In regards to the caller's question, I think it's very important for the shadow cabinet to question what the person is doing. That's what democracy is. That's what the democracy is. Yeah. To have checks and balances, to question on key subjects, economy, health and social care. What the governing party is doing is not always correct. It doesn't always align with what the populace actually agreed to during the electoral But time. in a democracy, the reason I think to answer Sanjay's question is that there are two parties, and yes, it would be lovely if they're united for the greater good of the people, but sadly that's not the case. Usually they have separate manifestos, so they have separate issues that they want to deal with, and they get elected accordingly to those issues. So it's really hard. I mean, that would be a utopia, won't it, if all of our parties became friends for the greater good. But sadly, in a democracy, there's always going to be opposition. And the whole definition of a democracy, that there has to be multi-parties for the electorate to choose from. And
in England we have two major ones. We recently had a resurgence of UKIP. I think they had almost 4 million votes. So there are people trying to hammer through, but still we've always got the Conservatives. No, but it's a protest party. It's a protest. But what I'll say to my viewers at this point of time is that the issue is that what makes a country to deliver for their public is important. You have to consider that you're living in a democratic country like UK, you're living in a democratic country like in India, or in a country where regular elections are happening in Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, wherever you are living. I think the focus should be that you should try to vote beyond your own religion, caste, बरादरी, इससे बाहर निकल के वोट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे सिस्टम में ये होता आ रहा है कि सारी वोटिंग जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर जाती है आपकी इनिशियल या इमीडिएट बरादरी पे. उससे हमें निकलना बहुत ज़रूरी है. और कॉलर्स, आई आस्क यू ऑल द व्यूअर्स, आई आस्क यू टू प्लीज गिव अस अ कॉल. वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस. प्लीज डू कॉल अस, लेट अस नो योर व्यूज एंड विल इंक्लूड दैट एज पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, बिकॉज आपकी पार्टिसिपेशन से ये प्रोग्राम आगे चलता है. आई विल कम बैक टू, वी हैव गॉट अ कॉलर. Pratap, go ahead. Good evening. Good evening, Pratap. Thank you for coming on the show. जी, मैं डेमोक्रेसी की बात हो रही है. यहाँ भी ब्रिटेन में भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है. लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया को हम लोग यहाँ के जो ब्रिटेन का मीडिया है या जो भी है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहता है, इंडिया पाकिस्तान हो या जो भी एशिया कंट्री है. लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी डिफरेंट है, यहाँ पे भी डिफरेंट है. हालांकि दोनों में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग सब हैप्पी कहते हैं ब्रिटेन डेमोक्रेसी है, लेकिन ऐसा नहीं है. क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट करती है या कुछ रॉन्ग भी करती है तो कोई सड़क पे नहीं निकलता. या और इंडिया को हम जितना भी बुरा कहे या जो भी करप्शन है या जो भी है, लेकिन लोग बोलते तो अगर कोई खराब करता है, कुछ भी करता है, वो सामने बोलते हैं कि भाई ये खराब किया है या इस मिनिस्टर ने कुछ गफला किया है, कुछ करप्शन किया है या ये डिसीजन गवर्नमेंट का रॉन्ग है. यहाँ पे गवर्नमेंट इतने रॉन्ग डिसीजन लेती है, लेकिन किसी के पास, क्योंकि हम इतने दबे हुए हैं अपने काम में या इतना प्रेशर है यहाँ पे कि हम कुछ बोल ही नहीं सकते, और हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम किसी पार्क में या सड़क पे जाके या कोई प्रोटेस्ट कर सके या किसी को कहीं बोल सके. बस हम इलेक्शन आता है, हम वोट कर देते, लेबर हो या कंजर्वेटिव हो या जो भी हो, उसको वोट कर देते, गवर्नमेंट आ जाती है, वो अपनी मनमानी करती है, चाहे NHS में कट हो, चाहे कोई भी हो. देखो अभी ये रिसेंट ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर है उसने अर्ली इलेक्शन करवाया, ठीक है. वो हालांकि वो माइनॉरिटी में आ गए, लेकिन फिर भी वो वहां पे प्राइम मिनिस्टर के पद पे है, ठीक है. और उसने नेक्स्ट उसकी स्पीच क्या थी मॉर्निंग में, सारे कंट्री के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम है, ये इतना खराब है, सभी को साथ लेना है, सभी को हेल्प करनी है. क्यों हेल्प करें? आप लोगों ने खराब किया है, अर्ली इलेक्शन आप लोगों ने करवाया, ठीक है. तो अगर ऐसा इंडिया या पाकिस्तान और कंट्री में होता तो बड़ा हंगामा हो जाता, लेकिन यहाँ पे हुआ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमें प्रेशर टैक्स का इंश्योरेंस, ये वो गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट कंपनीज है या जो भी जो गवर्नमेंट की पार्ट कंपनीज है, इतना राइट दे रखा है कि यहाँ पे लोगों को, इससे तो मेरे ख्याल से इराक में जो सद्दाम था ना वो भी ठीक था. इतनी दबी हुई प्रजा यहाँ पे. प्रताप, आपका कहना दुरुस्त है, आपका कहना दुरुस्त है. इराक में या साउथ प्रताप वहाँ की पब्लिक में यहाँ से हैप्पी हो. नहीं प्रताप, रहते हैं ब्रिटेन में, कहते हैं डेमोक्रेसी. I agree with him. We should be getting out on the streets more. नहीं प्रताप, आपका कहना दुरुस्त है. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो. आपकी इनपुट से ये शो में एक डिफरेंट डायमेंशन अब नज़र आई है कि ये जो इश्यूज़ हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो इतने कंप्लेसेंट क्यों हैं. आई थिंक एक इशू है कि हर कोई बेसिकली अपनी फुल एम्प्लॉयमेंट
अपनी बेसिकली अपनी उसमें डेली जो उसकी बेसिकली एक वरीज हैं उसमें वो फंसा हुआ है। हालांकि हमारे पास हाइड पार्क है, आप जाके वहाँ जो नारे लगा सकते हैं लगाए, कोई नहीं आपको रोकने वाला। इवन ये कि हम यहाँ पे अगर जाएं बेसिकली प्रोटेस्ट करना चाहें तो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो सकता है, 2 पुलिस को लेटर लिखें, जगह बताएं और प्रोटेस्ट किया जा सकता है, लेकिन हम कंप्लेसेंट हैं। आई थिंक दैट्स डेफिनेटली एन इशू। सदफ आप कुछ कह रही थी? Yeah, I think, as Pratap says, there is an appetite for protest in regions such as India and Pakistan because I think the environment they have is far more exasperated. You know, they are dealing with threats that we don't have to deal with in the West on a relative basis. But there is an undercurrent of frustration. I mean, the recent Nawaz Sharif riots and protests and his, declaration of democracy. But I think what was made clear in South Asian press was one man is not democracy. The reason why the rallies were held was to basically lift up to the surface the undercurrent of exasperations, the threat of the militant mindset. Yeah. People are relying on either veering towards an extremist banned militant network as a political party, as you'd see in Pakistan with the Milli Muslim League, or you are veering towards the military. Yeah. You No, don't no, have the options are very complex in those regions where we in England are dealing with. I think हम लोग थोड़े जज्बाती भी हैं. Our main concern in the West is the economy. No. As Clinton said, is the economy stupid? Yes. It really is. It balances down to. We have got a caller now. Just a minute. We've got a caller now on Mr. Hussain. Please go ahead with your call. Thank you very much, Dr. Hussain. Thank you very much coming on the show, Dr. Hussain. Thank you, sir. Well, a very simple question. Has democracy got to do anything with the region of the world we live in? For example, all the democracy works very well in the West, but in the East it doesn't. There are dictatorships and monarchy and whatnot. So how come that it works in the West and not in the East? तो आपका क्वेश्चन है कि वेस्ट में डेमोक्रेसी है, ईस्ट में नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है? जी ठीक है डॉक्टर साहब, we'll go for a short break and we'll come back and we'll answer your question. Stay with us.